I'm Dr. Mayur Priya. We are myself and my husband are pathologist and working in Mumbai. Actually, last year around May, I had slip disc and sciatica pain and burning of both the feet, and I was almost bedridden. Couldn't do my daily chore or any of the activities, and there was a lot of pain. I tried all allopathic medicines, plus I tried for the steroid injections, but there was no relief. And the only next step was the surgery, which I was a little bit scared to operate on the spine. So I was finding out the alternative therapies, and I came across this Avisha Healing neuromusculoskeletal program. And then I enrolled myself for that. And within their first module, that is वात का खाली 5 या 6 दिन हो गया था, उसके बाद में there was a tremendous pain relief, burning sensation was gone totally, and मेरी movement, range of movement बहुत बढ़ गई. This change was there within the first week. Along with that, there was a very sound quality sleep, and I was automatically getting it around 4:30 in the morning. This was all automatic. Otherwise, I used to get up around 7:30 in the morning. And the energy levels were very, very high to do the daily activities or even any creative work or in the dealing with the patients and everything. The quota of the energy was increased. This change was within the first week only. After doing the first वात का कुंभक क्रिया करने के बाद ये चेंज आया. उसके बाद में when we entered into the second, जब भी पित्त का उन्होंने सिखाया मैडम ने, तभी the changes were at the level of mental level and the emotional level. Mentally, focus was increased, concentration was increased, grasping power was increased, and overall जो mental all capacities जो है अपनी planning की, comprehension की, all where there was a sudden increase in all these levels. Plus, I was more compassionate person and more, you can say, happy person. These changes were there when they made us to do through the pith part of the kriyas. And if at all somebody is following the spiritual path or somebody is means doing whatever spiritually जो इंडिया का है वो कर रहे हैं, उस वो लेवल पे भी आपको बहुत सारे चेंजेस मिलेंगे that cannot be expressed, but बहुत ज्यादा मीन्स बहुत ही ज्यादा वो लेवल पे चेंजेस आते हैं with this. दूसरा, there is a tremendous increase in the confidence within the system. It is not because of any external achievement or even because of the you feel better. उसके लिए नहीं है. This is a mental change. तुम्हारा fear, anxiety, everything is relieved. Even if you have little bit of depression and all that, that is also gone. And तुम्हारे में एक जबरदस्त confidence level increases and एक fearlessness comes. Means yes, fearlessness is not something कि stupid का fearlessness नहीं, but there is a confidence and fearlessness. Yes, I can handle the life. I can come out my own disease. ये सब changes even the mental pattern पे, emotional pattern पे बहुत ज़्यादा impact होता है ये सब चीज़ों का. And with that, physically, many of movement restrictions were there to me, like bending was not possible, squatting down was not possible, and many more things were there. Today, I have completed the Avisha course, means February में मैंने join किया था, April end में मेरा खत्म हो गया था, और I am able to squat down completely, and next महीने में I am planning to go back to the gym schedule. Means इतना improvement within such a short period, एक miraculous journey था. Means, and I never expected कि this will heal me to this extent, having impact on my physical, mental, emotional, spiritual सब planes के ऊपर मेरा impact हो गया. And if anybody is having doubts कि online platform है, कैसा होएगा, क्या होएगा, तो this is one of the most transparent and excellent platform. वो जो भी commit करते हैं वो पूरा करते हैं. Even and their whole lessons come on our this thing WhatsApp group.
वो lessons are also so beautifully designed and beautifully shown. Means picture जो उन्होंने जो recordings किए हैं उसकी descriptions दिए हैं वो इतनी सुंदर है ना कि आपको कभी भी नहीं लगेगा कि हम लोग डायरेक्ट 1-to-1 पढ़ाई नहीं कर रहे हैं. वो फीलिंग कभी भी नहीं आएगी. It is always you feel कि yes, ma'am is sitting in front of us or somebody is sitting and they are teaching us. And और एक खूबी इनकी ये है कि जब भी सपोज लाइक इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डिसीज हम लोग ज्वाइन करते हैं वी डू हैव अ लिमिटेशन कि हम लोग पूरा नहीं कर पाते हैं द वट एवर दे टीच वी आर नॉट एबल टू डू इट इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म. बट उन लोग इतने सारे वेरिएशंस देते हैं ना डिपेंडिंग अपॉन द योर कस्टमाइज वेरिएशन कम पर्सन टू पर्सन. तो at the end of the course definitely you are almost able to do whatever they are teaching. यानी ये बहुत ही सुंदर इनका है जो वेरिएशन दे गिव इवन इफ वी आर नॉट एबल टू मीन्स आई वॉज नॉट एबल टू बेंड डाउन आई वॉज नॉट एबल टू डू ऑलमोस्ट एनीथिंग. लेकिन उनके वेरिएशन जो मैडम ने दिए उसके थ्रू मैं करती गई और आज मैं सब कुछ कर पा रही हूँ द दे वी हैव टॉट इट. और मेरा जर्नी में मुझे एक बात ये बताना है कि यू हैव टू बी वेरी रेगुलर. मे बी आप पूरा का पूरा नहीं भी कर पाएंगे पूरा का पूरा टाइम डेडिकेट नहीं भी कर पाएंगे फिर भी रोज का रोज प्रैक्टिस में यू हैव टू बी रेगुलर. एटलीस्ट जब भी वो सिखा रहे हैं तभी you will realize all the changes which are coming within yourself in all levels and they you automatically will continue the thing. ये मुझे बताना है. और जो मेरी इंस्ट्रक्टर हमारा जो मेंटर था सोनी मैम वाज देयर. शी वाज एक्सीलेंट टीचर. वो बहुत मीन्स क्या बोलो आपको कि कभी भी उन्होंने हमको मेरे को तो लिटरली मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने मुझे उठाया है और मेरे में आई कैन एबल टू डू एवरीथिंग वो कॉन्फिडेंस डाला है. मीन्स इट इज एंड इट्स अ वेरी ट्रांसपेरेंट थिंग वॉट एवर दे से इन टर्म्स ऑफ द कोई भी बोलो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उनकी कमिटमेंट्स की वो लोग इतना मटेरियल देंगे या वीडियोस देंगे एवरीथिंग दे आर कमिटेड टू इट. एंड वन मोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दे आर अवेलेबल व्हेन यू व्हाट्सएप देम और यू कॉल देम. यस दे आर अवेलेबल. इतना ही बोलना है मुझे. I was means even my husband had avian after post corona. Yeah.